वेलकम बैक टू द अनदर न्यू सेशन गाइस। सो आज ना, जैसे कि आप लोग पहले ही देखे हैं कि मैंने पेपर 20 का एक होलसम रिवीजन सीरीज ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड किया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर से देखिए। इट विल हेल्प यू वन डे बिफोर एग्जाम एज वेल एज इट विल हेल्प यू टू कवर द होल सिलेबस इन अ वन गो। एंड शायद 12 वीडियोस अपलोडेड है along with the notes. So अगर आप लोग वो अच्छे से फॉलो करके जाएंगे एंड नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ। आज हम लोग और एक चीज करने वाले हैं, दैट इज द एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया था। द एमसीक्यू बैंक which has been uploaded by the institute itself in the last year. तो अगर आप लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उस पर आप लोग आराम से समझ पाएंगे कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए आज हम लोग टोटल 180 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आप लोगों को पूरा 180 क्वेश्चंस कवर अप करके दूंगा। तो आप लोगों को बस खाली सुनना है और इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। खुद से सॉल्व अगर कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। अगर टाइम नहीं है तो मेरा वीडियो देखिए, आप लोग बहुत जल्दी से पूरा 180 क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे मेरे साथ। अगर आप लोग खुद से देखेंगे तो भी होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अगर मेरे साथ आप लोग देखेंगे तो बहुत जल्दी से आप लोग फटाफट कवर अप कर सकते हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, आप लोग देख ही सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट का ही पूरा मटेरियल है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए। आराम से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और खत्म करेंगे पूरा एमसीक्यूज। टोटल 180 एमसीक्यूज है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक, अच्छा मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं जो आंसर है उसको यहीं पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हाईलाइट कर दूंगा। तो आप लोग साथ साथ मेरे साथ कर सकते हैं या तो फिर आप लोग बस सुन भी सकते हैं, ठीक है ना? तो जो करेक्ट आंसर होगा मैं वहां पे यहीं पे जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। आप लोग बस खाली सुनते रहिए। जैसे पहले, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर्स आर लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या होना चाहिए? आप लोगों को सबको पता है कि चारों ही कवर हो जाएगा, तो ऑल द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर लाइक assume all the risk associated with a venture, have the perseverance, positive thinker। यहाँ पे भी all the above हो जाएगा करेक्ट आंसर। The law of patience and perseverance is applicable for managing projects, navigating the change, मास्टरिंग या स्किल, ऑल द अबव। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है। एंटरप्रेन्योर कैन फॉलो द रूल्स। नाउ व्हाट आर द एमसीक्यूज? एक्सेप्ट फेलियर एंड टेक इट एज अ लेसन फॉर फ्यूचर मूव्स, stick to something and stay on course despite difficulties, tolerance is the most essential component of an entrepreneur, all the above। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? ऑल द अबव होने वाला है। नेक्स्ट, अ गुड डिसीजन मेकर शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल, नेगेटिव थिंकर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव थिंकर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव थिंकर। आप लोग बस मेरे साथ सुनते रहिए और साथ साथ में जो करेक्ट आंसर मैं हाईलाइट कर ही दे रहा हूँ, तो आप लोगों का एक ही साथ हो जा रहा है। आप लोगों को बाद में जो लास्ट में के आंसर दिया वो देखने का दरकार नहीं है, फटाफट मेरे साथ खत्म होता जाएगा। नेक्स्ट, which of the following factor affect the capital structure? Company life cycle, cost of capital, use of leverage, all the above। तो करेक्ट आंसर would be all the above। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं that the pillar of inbound marketing is content, social, search and all the above। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? all the above। तो देख रहे बहुत इजी है, आप लोग एक बार मेरा रिवीजन सीरीज देख के आएंगे, मेरा नोट्स पढ़ेंगे, आराम से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, when platform like Facebook, Instagram, LinkedIn are used for marketing is known as social media marketing, video marketing, voice marketing, none of the above। तो it should be what? It should be social media marketing। Next, entrepreneurs involves decision making, innovation, forecasting of the future, all the above। क्या होना चाहिए राइट आंसर? राइट आंसर होना चाहिए ऑल दी above। राइट आंसर होना चाहिए ऑल दी above। ठीक है, तो साथ साथ मेरे साथ आप लोग
देखते जाइए, आराम से हो जाएगा आप लोगों का भी। नेक्स्ट, entrepreneurship is a dynamic process, risky process, both one and two, none of the above. So answer would be both one and two. Answer would be both one and two. Next, entrepreneurship involves a fusion of capital, sorry, highlight नहीं करना है, fusion of capital, technology, human talent, all the above. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, human entrepreneurship is equally applicable to क्या हो जाएगा, entrepreneurship involves a human talent, a technology, a fusion of capital, all the above. तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, सॉरी, ह्यूमन टैलेंट, राइट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ह्यूमन टैलेंट। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग एक बार खुद से पढ़ेंगे, रिवीजन सीरीज मेरा वीडियो देखेंगे, मेरा नोट्स पढ़ेंगे, देन इसमें आप लोग आएंगे, जम करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग एग्जाम के एक बार पहले देख रहे हैं या फिर एग्जाम जाते जाते सुन रहे हैं, तो आप लोग मेरा ये वीडियो देख लीजिए, फटाफट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पूरा 180 एमसीक्यू, यहाँ से आप लोगों का कवरेज मिल जाएगा। और बहुत सारा देखना यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, जितना मुझे पता है और मेरा जितना बिलीव है, पता नहीं है बट बिलीव है मेरा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, entrepreneurship is equally applicable to big business, economic and non-economic activity, small business, all of the above. तो क्या हो जाएगा, that is all of the above. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, all of the above. Entrepreneurship is the attitude to mind to seek opportunities, take calculated risks, derive benefit by setting up the venture and all of the above. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, all of the above हो जाएगा, ये भी all of the above हो जाएगा। Next, which one of the following is not a driving force for entrepreneurship development? Management, opportunity, resources, talent. कौन सा होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि रिसोर्सेज होना चाहिए कि टैलेंट होना चाहिए? आंसर होगा टैलेंट। आंसर क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, what has dramatically lowered the cost of starting a digitally enabled business in the last decade? Increased manual labor, the rise of social media platform, government subsidies. Next is high speed connectivity with inexpensive powerful remote computing. The answer should be this one, right? I think इसमें कुछ मिस्टेक है। ambiguous, high speed connectivity and powerful and remote computing should be the answer, ठीक है। Next, Michael Desserts estimate that how much US white collar jobs will migrate to India. 10 million, 25 million, 50 million, 100 million. Now these type of questions are very much tricky, क्योंकि हम लोग को इसमें क्या होता है ना, वो अमाउंट याद होना जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है डिटेल में, तो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और ये क्वेश्चंस आएगा तो डिफिकल्ट तो है ही, ये मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फिगर याद रखना। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैट में ये है और इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बुक में ये दिया गया है, तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा। तो इसका आंसर होगा 50 मिलियन, ठीक है। इसको आप एज सच तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिगर पूछ रहा है। सिमिलरली, हाउ मच माइकल रिसर्च एस्टिमेट द माइग्रेटेड जॉब्स विल एड टू इंडियाज जीडीपी? इसमें भी वही बात याद रखने वाला, 1 ट्रिलियन होगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने खुद पूरा पढ़ा है तो इसमें मुझे याद है, बट जरूरी नहीं है कि सबको याद होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक बार इंस्टीट्यूट का मैथ का अगर टाइम है तो पूरा गो थ्रू कीजिए, नहीं तो मेरा डिवीजन से काम हो जाएगा आप लोगों का। Next, what is considered the biggest opportunity that has come to India via the West? Manufacturing industry, agriculture advancement, information technology, pharmaceutical development. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 19 में क्या हो जाएगा, सॉरी 19 इज नॉट 18 क्वेश्चंस जो हम लोगों का चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अ फीचर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द पैसेज? Increasing speed, increasing accuracy, reducing the physical size of the data, enhancing creativity of design. तो यहाँ पे होगा enhancing creative design capabilities, enhancing creative design capabilities. Next, question number 20. What benefit it does regarding the data repositories? डेटा रिपोजिटरी का क्या बेनिफिट है, डेटा रिपोजिट का क्या बेनिफिट? It increase the physical size of the data repository. It eliminate the need for data repository. It reduce the physical size of the data repositories. It make data repositories obsolete. तो इसका क्या फायदा होने वाला है 21 का? It provide high and it reduces the physical size of the data repository. तो इसका आंसर हो जाएगा it reduces the physical size of the
data repository. That should be the correct answer. Next question number 21. What effect does IT have on the accuracy of org compared to human based business? ह्यूमन बिजनेस से क्या इसका हो सकता है? तो IT प्रोवाइड हाई एंड कांस्टेंट एक्यूरेसी. सो इट प्रोवाइड हाई एंड कांस्टेंट एक्यूरेसी. इसका आंसर होगा. ठीक है ना. इट डिक्रीज द एक्यूरेसी नहीं होने वाला है. इट मेक द एक्यूरेसी मोर वेराइड नहीं होने वाला है. इट एलिमिनेट द नीड फॉर एक्यूरेसी. ये भी नहीं होगा. Next, which one of the following is a key advantage of using IT business operation? Increasing manual labor requirement, decreasing productivity, reducing labor time and increasing productivity, increasing administrative and intermediaries. तो इसका क्या आंसर होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 का reducing labor time and increasing productivity. तो इसका आंसर होगा reducing labor time and increasing productivity. Next, which one of the following macroeconomic condition is beneficial for entrepreneurship? Good infrastructure, लेस रेगुलेटरी एनवायरमेंट, टैक्स बेनिफिट, ऑल ऑफ द अबव. ये तो बहुत इजी है. ये तो ऑल ऑफ द अबव आप लोगों को पता ही चल गया होगा पढ़ के, राइट. नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर 16, 2000, 2017, 2018, 2019. आई होप सो आप लोगों को पता है 2016 में लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया. Which one of the following is a pillar of Startup India? Hand holding, funding support, industry academia partnership, all of the above. I think ये भी आपको पता होना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे कवर होगा क्योंकि इसमें सब कुछ होगा. हैंड होल्डिंग भी होगा, फंडिंग सपोर्ट भी होगा, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप भी होने वाला है, राइट. नेक्स्ट, समृद्ध स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर कौन सा? 1st January 2021, 25th August 2021, 15th August 2021, 25th December 2021. The answer should be 25th August 2021, right. ये याद रखना होगा. ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी होगा, आई नो दैट. तो इसको आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा. थोड़ा सा ट्रिकी तो है, ये मुझे भी पता है. तो आप लोग याद रखेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एस्पायर इज अ स्कीम ऑफ प्रमोशन of innovation, rural and industry and entrepreneurship. A scheme for promotion of industries, rural innovation and entrepreneurship. A scheme for promotion of innovation, rural industries and enterprises. तो ये आंसर होने वाला है a scheme for promotion of innovation, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये. नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च. कब लॉन्च हुआ था? ये भी याद रखने वाला चीज है. 2016 में. दूसरा 15 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 2016 में, राइट. नेक्स्ट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिजिड, फिक्स्ड, रेगुलर, ऑल ऑफ द अबव. परमानेंट वर्किंग कैपिटल is also, is alternatively known as, not also, is alternatively known as rigid, fixed, regular, all of the above. So answer is all of the above. Next, temporary working capital is known as variable, seasonal, flexible, all of the above. Temporary capital is also known as variable capital, seasonal capital, flexible. ये भी all of the above होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा all of the above. Payable of trade credits may be expressed in open account, promissory notes, bills payable, all of the above. Payable trade credit may be expressed in open account, promissory note, bills payable, all of the above. इसका आंसर होगा all of the above. तो ये तीनों का ही आंसर all of the above हो रहा है. Next, as per section 3(2) of the Companies Act, a company formed under subsection 1 may be either a company limited by shares, a company limited by guarantee, अनलिमिटेड कंपनी, ऑल ऑफ द अबव. ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑल ऑफ द अबव के अंदर ही कवर होगा. नेक्स्ट, 9 प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आर सजेस्टेड बाय आइजनबर्ग 2009, आइजनबर्ग 2010, आइजनबर्ग 2011, आइजनबर्ग 2012. तो इसका आंसर होगा आइजनबर्ग 2010. ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे. मैं साइड में स्टार दे रहा हूं, राइट. नेक्स्ट, the geographical indications of goods registration and protection act passed in India. ये भी याद रखना होगा. that is 1999, 2000, 2001, 1999 1. so 1999, 2000, 2001 and 1991. इसमें से आंसर होगा 19,000, सॉरी
19,000 नहीं 1999, that is 1999, that is 1999. Next, CGPDTM stand for, अगेन फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका क्या क्या दिया गया है, इन लोगों ने दिया है कॉमर्स जनरल पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डेवलपमेंट नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट टैरिफ एंड डिजाइन। इसका आंसर होगा ये, दैट इज थर्ड पॉइंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। Next, what happens when a business has too high an amount of working capital? It increases profitability and liquidity. It reduces liquidity and increase profitability. It increases liquidity but reduces profitability. It has no impact on profitability or liquidity. So what happens when business has too high an amount of working capital? It increases liquidity but reduces profitability. This should be the correct answer. Next, which one of the following is a danger of having too high an amount of working capital? क्या होगा इसका आंसर? Unnecessary accumulation of inventories, inability to meet day-to-day current obligations, stagnation of growth, difficulty in operating plan. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा unnecessary accumulation of inventories, unnecessary accumulation of inventories, right? नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। 38 question number. What is the consequence of having ideal fund due to excess working capital? Increase profitability, increase operational efficiencies, loss of potential profit, improve credit facilities. क्या होने वाला है इसका आंसर? That is, what is the consequence of having ideal fund due to excess working capital? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? Loss of potential profit. Loss of potential profit. That is, should be the correct answer. Next, what does excess working capital indicate about company's credit policy? The credit policy is effective and efficient. The credit policy is defective, resulting in higher bad debt. The company has no credit policy. The company has a perfect balance of credit policy. तो इसका आंसर होगा the company credit policy is defective and resulting in higher bad debt. Next, question number 40. Which one of the result of having overall inefficiency due to high working capital? हाई वर्किंग कैपिटल के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी का क्या रीजन हो सकता है? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी या इंक्रीज पिल्फरेज एंड थेफ्ट या डिक्रीज लिक्विडिटी या इंप्रूव ऑपरेटिंग प्लान्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंक्रीज पिल्फरेज एंड थेफ्ट, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज अ क्रिटिकल ड्राइवर फॉर द स्टार्टअप बूम इन इंडिया? ट्रेडिशनल मार्केटिंग, गवर्नमेंट सब्सिडी, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो आंसर शुड भी क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये हम लोग सभी को पता है, इन जनरल इसको आप लोग सोच के भी आंसर दे सकते हैं। व्हाट एडिशनल अपॉर्चुनिटी डज डिजिटलाइजेशन प्रोवाइड एन एंटरप्रेन्योर? इंक्रीज लेबर कॉस्ट, मोर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एनहांस ऑफलाइन मार्केटिंग टेक्निक, एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ऑब्वियस बात है, दैट इज एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट, what advantage do social media platform offer in terms of customer data? They provide generic data with little detail. They offer anonymous data that is difficult to interpret. They provide actual data and detailed customer profiles. They provide outdated customer information. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का? They provide actual data and detail what? They provide actual data and detailed customer profits. इसका आंसर होगा ये, right? Next, what is benefit endorsing product on social media platform? Higher cost for advertisement, limited reach to potential customer, reduction in marketing cost, increased dependence on traditional marketing and methods. क्या आंसर होने वाला है? Reduction in marketing cost should be the answer. तो आंसर होगा क्या? This one. Next, the important guideline for monetizing the product are outlined below. क्या होगा? Emphasize customer, emphasize क्या? Customer experience, emphasizing customer experience, long term thinking process,
क्रिएटिव इन अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन व्हिच an entrepreneur start a company with a little capital relying on money other than outsider investment, that is called bootstrapping। ये हम लोगों ने डिटेल में चर्चा भी किया था पहले, तो ये आंसर होगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दिया। एंजल इन्वेस्टिंग भी नहीं होगा, वेंचर भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फीचर of bootstrapping are mentioned below. No outside investment, depend on personal savings, personal debt, flexibility in the early growth phase, all of the above। क्या होने वाला है? सब कुछ कवर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कवर हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट, which one of the following is not angel investor in India? एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल, एंजल कोलकाता, हैदराबाद एंजल। कौन सा नहीं है? एंजल कोलकाता। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय द एंटरप्रेन्योर इज एसेंशियल, यूजफुल फंक्शन, बोथ 1 and 2 एंड नॉट एसेंशियल। तो इसका आप लोग खुद ही समझ के आई होप पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज डैश डॉक्यूमेंट, एन ऑपरेटिंग, अ फाइनेंसिंग, अ रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट क्या रिपोर्ट है? ये आप लोग अगर सोचेंगे थोड़ा तो आप लोग भी बोल सकते हो दैट इज एन ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट, दैट इज एन ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं 50 क्वेश्चन हो गया और बस 20 मिनट में। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेरे साथ ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो विद इन आवर आप लोगों का पूरा 180 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, या हो जाना चाहिए। 1 घंटे से थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा कम हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम लोग क्योंकि पूरा डिस्कस करके कर रहे हैं तो हो जाएगा। और आप लोग अगर टाइम खुद से देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि एग्जाम के पहले हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो वी शुड कंप्लीट दिस थिंग्स इन अ effective and efficient way, right? Next is data analytics is the science of integrating data from diverse sources, drawing interference, making predictions to enable innovation, gain competitive business advantage and help strategic decision making। So what should be the answer? आंसर क्या होना चाहिए? हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, स्टैटिक, डायनामिक, क्या आंसर होना चाहिए? हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, स्टैटिक एंड डायनामिक। करेक्ट आंसर इज heterogeneous। करेक्ट आंसर क्या होगा? heterogeneous। Dash entail analyzing the relationship between dependent variables to determine how a change in one may affect the change in another। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये इसका आंसर क्या होगा? रिग्रेशन होगा कि फैक्टर होगा कि टाइम सीरीज होगा कि कोहॉर्ट होगा? दैट शुड बी द रिग्रेशन एनालिसिस, राइट? नेक्स्ट, question number 53. Dash takes a large data set, shrinking to a smaller data set. The goal of this technique to attempt to discover hidden trend that would otherwise have been more difficult to see. That is regression analysis, factor analysis, time series analysis, cohort analysis। क्या आंसर क्या होने वाला है इसका? बताइए आप लोग सोच के थोड़ा फटाफट। That should be factor analysis, right? Next, dash is the process of breaking a data set into a group of similar data, often broken into a smaller demographics. This allows data analysis and other users of data analytics to further dive into the numbers relating to a specific subset of data। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, कोहॉर्ट एनालिसिस। सो दिस शुड बी नोन एज कोहॉर्ट एनालिसिस, राइट? Next, dash track data over time, solidifies the relationship between the value of data point and occurrence of the data point. This data analysis technique is usually used to spot cyclical trend or to project financial forecast. That is known as regression analysis, factor analysis, time series analysis, cohort analysis। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56, that is what is the primary consideration when looking for startup financing? The type of product or service, the geographical location, the number of competitor, how much money you need and when you will need it। तो इस चार में से आंसर कौन सा होगा सही? आप लोग थोड़ा सोच के बताएंगे। That should be how much money you need and when you will need it। This should be the right answer। Next, at which stage does an entrepreneur work on bringing an idea to life with a usually small amount of fund? Pre-seed stage, seed stage, validation stage, idea generation stage। So it should be
idea generation stage. Next, what does bootstrapping a startup involve? Using large venture capital fund, relying on personal savings and revenue, securing government loan, receiving investment from incubators. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर शुड बी रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम incubators. Next, which source of funding is commonly utilized by entrepreneur due to inherent level of trust between the parties involved? Business plan and pitching events, friends and family, government loan and scheme incubators. तो इसका एक सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है friends and family. Next, what is the primary goal at the validation stage of a startup? To secure government loan, to validate the potential demand of product and service, to acquire competitor, to expand internationally. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? What is the primary goal at the validation stage? Question number 60. To validate the potential demand of the product or services, right? Which stage involve conducting field trials and building a formal team? Idea generation stage, pre-seed stage, validation stage, seed stage. तो इसका आंसर होगा सही seed stage. Next, what do incubator provide to startup besides funding? Marketing campaign, real estate investment, value-added service like office space, utilities and legal assistance, direct customer acquisition. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 62 का value-added services like office space, utilities and legal assistance, right? Next, which government schemes are mentioned as providing collateral-free, important, collateral-free debt to aspiring entrepreneur? National Small Industries Corporation Scheme, Pradhan Mantri Mudra Yojana Scheme, Startup India Seed Fund Scheme and SIDBI Funds, अटल इनोवेशन मिशन. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एंड सीडबी फंड्स ऑफ फंड्स, राइट? इसका सही आंसर होगा ये. नेक्स्ट, व्हाट इज टिपिकली कंडक्टेड एट द वैलिडेशन स्टेज टू टेस्ट द स्टार्टअप्स प्रोडक्ट और सर्विसेज? Again, what is typically conducted at the validation stage to test the startup's product and services? Market analysis, proof of concept, financial audit, branding exercise. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? Proof of concept. Next, who are considered stakeholders in a business plan? Promoter of the business, competitors, government agencies, all of the above. So there should be the promoter of the business. Next, question number 66. What does a sustainable business model aim to achieve? Maximizing short-term profit, creating value without depleting natural, social, or economic resources, expanding globally, focusing solely on economic gains. So that correct answer should be creating value without depleting natural, social, or economic resources. Next, what are the three pillars of sustainability mentioned in the passage? What are the three pillars? इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को याद है तो. थ्री पिलर क्या है सस्टेनेबिलिटी मेंशन का, थ्री पैसेज का? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोडक्ट, पीपल, परफॉर्मेंस एंड पीपल, प्रॉफिट, परफॉर्मेंस एंड पीपल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल, क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन. इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 67 का इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल. नेक्स्ट, व्हिच कंसेप्ट एनकरेज फर्म टू engage in profitable activities that benefit society and environment? Business plan, feasibility plan, triple bottom line and market analysis. That is known as triple bottom line. Next, which benefit of a business plan helps in evaluating the business worth? Enhance business growth, help in the valuation of the business, helps to develop business partnership, gives clarity to the stakeholders. So helps in the valuation of business, helps in the valuation of the business. Next, a lean startup is strategy. A lean startup क्या है? Lean startup is a strategy that is used dash on behalf of a present entrepreneur to initiate a new company, to launch a new product, to initiate a new company or launch a new product. None of this. क्या होना चाहिए इसका आंसर सही? To initiate a new company or launch a new product. Easy. Next, dash is a powerful blend of structure meeting, strategic tools and experienced leadership. Marketing traction,
marketing management, marketing strategy, marketing trick. That should known as marketing traction. Dash is the act of designing companies offering an image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. क्या होना चाहिए इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशनिंग, क्या टारगेटिंग, या मार्केट ट्रैक्शन, या मार्केटिंग इनोवेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशनिंग. नेक्स्ट, product positioning is the process of determining new product's position in the minds of the consumer. That is known as product positioning, targeting, marketing traction, marketing innovation. So that is known as what? Product positioning. Innovation idea comes from several sources, including unreasonable demands, goal and time pressures, unreasonable demand or goal and time pressures, reasonable demand or goals and time pressure. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Unreasonable demand or goals and time pressures. Next, and dash process is a set of steps between an idea's conception and its implementation. Innovation, research, startup, conceptualization. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनोवेशन बोलते हैं कि रिसर्च बोलते हैं कि स्टार्टअप बोलते हैं कि कंसेप्चुअलाइजेशन बोलते हैं. And dash process is a set of steps between an idea's conception and its implementation. Ideas का concept करना और उसका implement करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेशन. Organizations for economic cooperation and development called four type of innovations. Which one is not included in these four type of innovation? Marketing, product, organizational, price innovation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इनोवेशन, राइट? प्राइस इनोवेशन जो इसके अंदर कवर नहीं होने वाला है. Which one was not included? ध्यान देना. Through the design thinking process, what we do? We work on breaking down the business problem into smaller aspects. We start thinking from the base level to come up with the various solutions. We work on breaking down the business problem into smaller aspects and then start thinking from the base level to come up with various solutions. Something else. तो इसका आंसर हो जाएगा something else. Right? Next, in startup world, Dash is a powerful tool for owning in a real consumer need and bypassing costly hours, resources, hypothesizing and experimenting with different solutions. Different, that is known as design thinking, plan thinking, startup thinking, design planning. So this is known as design thinking. Next, most entrepreneurs are inherent what? Planned thinker, startup thinker, design planner and design thinker. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजाइन थिंकर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिजाइन थिंकर्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80. A lean startup attempt to solve the problem scientifically by using specific principle, and process both, और टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बोथ. द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग आर क्या? Identifying key benefit of a product and matching them with a customer need, finding a competitive advantage even when the market change, meeting customers expectation, all of the above. तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए all of the above. Next, positioning process is the dash process which companies do not ensure strong, positive and stable positioning in a consumer's mind. Continuous, reiterative, not a reiterative, continuous and reiterative and sporadic. इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 82 का? दैट शुड बी कंटिन्यूअस एंड रीइटरेटिव. कंटिन्यूअस एंड रीइटरेटिव, राइट? तो ये ध्यान देना. डैश इज यूज्ड बाय होलसेलर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस दैट डील्स विद डायरेक्ट सेल्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइंटरमीडिएशन मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल, ऑन डिमांड मॉडल, फ्रीमियम मॉडल. दैट इज नोन एज डिसइंटरमीडिएशन मॉडल. इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. आप लोग एक बार ध्यान से अगर देखेंगे मेरा रिवीजन सीरीज तो आप लोगों को याद आ जाएगा, राइट? Next, example of brand positioning is what? The brand Bisleri stand for purity. The brand Theater stand for the grip. Both of the above, none of the above. I think that should be the both of the above. What is one way innovation can help solve customer service problem?
by reducing number of customer, by operating a virtual office where customer need can be attended quickly, by increasing price of service, by decreasing quality of service. क्या होना चाहिए? That should be by operating a virtual office where customer needs can be attended quickly. Next, question number 86. Why is innovation important for adjusting with the change? It helps avoid change. It ensures that the business remains relevant and profitable. It reduces the need for new technologies. It eliminates the need for employee training. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? It ensures that the business remains relevant and profitable. What is direct benefit of solving customer problem through innovation? Decrease customer satisfaction, increase sales, reduce customer interaction, decrease product variety. क्या होगा इसका आंसर? बोलिए, डायरेक्ट बेनिफिट क्या है इसका? इंक्रीज सेल्स, ऑब्वियस बात है. What is the main focus of a characteristics based position? Competitive pricing, brand image and product characteristic, use or application, high quality or prestige. So that should be known as brand image and product characteristics. Which automobile brand is likely to be chosen by a customer who prioritize safety according to characteristic based positioning? Toyota, Volvo, Ford, Honda. क्या होगा इसका आंसर? Volvo. ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए. What strategy involves associating a company with competitive pricing? Characteristic based positioning, use or application based positioning, pricing based positioning, quality or prestige based positioning. क्या होगा इसका आंसर? That should be pricing based positioning. That should be pricing based positioning. Next, why is packaging, question number 91, which of the following is not considered a product according to definition given? Physical goods, service, weather, experiences. ये तो बहुत easy है, weather होगा, obvious बात है. Why is packing referred as a 5-second commercial? Because it is the first, मैंने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया. Because it is the first encounter a buyer has with the product, right? तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 5-second commercial. बाद बाकी मैंने और आंसर नहीं रीड ही नहीं किया, डायरेक्ट मैंने आंसर ही बता दिया आप लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93. Which of the following is not a function of packaging? Protecting, preserving, advertising, cleaning. क्या होगा इसका आंसर? Cleaning, right? Cleaning. Next, question number 94. Why is packaging important for startup? It reduces production cost. It simplifies the product manufacturing process. It helps gain trust and market the business. It guarantee instant success. क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा? It help gain trust and market the business. तो आंसर होगा ये. Next, which type of packaging might be used by a manufacturing industry? That product produces juice, boxes, trays, cans, bags. तो right answer क्या होगा? Cans. Next, what is the key component that should be clear and at the center of discussion when building a business model? Profit margin, value proposition, cost reduction strategies, employee benefits. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा value propositions. इसका आंसर होगा value proposition. Next, the viability of a business needs a conceptual structure that includes office, design and decoration, purpose, aims and plans for attaining them, employees, ड्रेस कोड एंड एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स. तो इसका सही आंसर होगा पर्पस, एम एंड प्लान फॉर अटेनिंग देम. व्हाट इज द रोल of the communication channel in a business model? To reduce cost, to translate the value proposition, to hire employee, to create office policies. क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 98 का बताइए आप लोग. To translate the value proposition, to translate the value proposition. Next, what is a fundamental requirement for creating a business according to the text? Reducing employee wage, creating an effective business model, expanding office spaces, increasing the production time. The right answer should be creating an effective business model. Next, dash is an example of crowdfunding. Domain crowdfunding, debt crowdfunding, reward crowdfunding, all of the above. The right answer should be all of the above. Scaling strategies include
streamlining, automation, create a franchisee, all of the above. The right answer क्या होगा? All of the above. Next, steps of elevator speech consist of purpose of identifying explanations of what makes unique selling proposition of identification. तो इसका right answer क्या होने वाला है? All of the above. Scaling up people is not including leaders, vendors, teams, managers. इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 103 दैट इज वेंडर्स. Dash include in steps to scaling the business, evaluate and plan, find the money, invest in technology. इसका राइट आंसर होगा all of the above. Barker's method is created by American venture capitalist and angel investor known. इसका नाम याद रखना, ये तो आप लोग याद ही रखना होगा. दैट इज डेव बर्कस, राइट. ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा. नेक्स्ट, what are the two main categories that sustainability in business generally addresses? Marketing and sales, financial gain and employee satisfaction, the effect on the environment and the effect on society, product development and customer services. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होने वाला है? The effect on the environment and the effect on society, right? Next, question number 107. What is the goal of sustainability management in business? To increase short-term profit, to minimize what? To minimize environmental impact and maximize resource conservation and reuse, to enhance marketing strategies, to improve customer service. तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर to minimize environmental impact and maximizing resource conservation and reuse. Next, which one of the following is one of the branches of sustainability? Marketing, human resources, economy, customer services. एक branch है, that is the economy. Next, what does sustainability management synthesize with the concept of management? Marketing strategy, employee satisfaction, concept of sustainability, customer feedback. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 109 का concepts from sustainability. Next, which exit strategy involves selling shares to existing partners upon requirement? Liquidate all asset, initial public offer, sell shares to existing partner, merge with another business. 110. That is sell shares to existing partners, right? Next question हम लोग जा रहे हैं. That is question number 111. Which exit strategy involves a company becoming a publicly traded, liquidate all assets, initial public offer, sell shares to existing partners, merge with another business? So the right answer क्या होगा इसका? 111 का right answer is IPO, that is initial public offer. Next, which sector saw the highest number of mergers and acquisitions within the Indian ecosystem? Fintech, EdTech, Health Tech and Enterprise Tech. 112 का आंसर होगा Enterprise Tech. Next, what primarily drove large startup to engage in mergers and acquisition in 2022 according to INC 42 survey? तो एक सर्वे हुआ था, इसमें क्या प्राइमरली ड्रॉव किया था? रिड्यूसिंग कॉस्ट, एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर ऑफ, एंटरिंग न्यू वर्टिकल्स, एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इंप्रूविंग ब्रांड रिकॉग्निशन. इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर और एंटरिंग न्यू वर्टिकल्स, राइट. नेक्स्ट, according to Don A. Moore's research, what effect do deadline have on negotiations? ये थोड़ा tricky questions है. They only affect one side of the negotiation. They decrease concession from both sides. They spur concession and creative thinking from both sides. They lead to increased tensions and hostility. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 114 का 114 का सही आंसर होगा the spur concessions and creative thinking from the both sides. What is the purpose of a shutdown move in negotiation? क्या पर्पस होने वाला है? To shut down communication between parties, to make the negotiation process more complicated, to limit competition from competitor during negotiation, to increase tension and pressure on the other party. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 115 का
to limit competition from competitor during negotiation. Next, how can taking a break during negotiation be beneficial? It prolongs the tense of atmosphere of negotiation. It allows parties to rush into hasty decisions. It provides time and space to unwind and reflect. It increases the likelihood of reaching a deadlock. तो आप लोगों को ये पता है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है मेरे साथ भी, it provide time and space to unwind and reflect होगा आंसर. Next, what does setting up a contingent contract allow parties to do? Avoid making any mistake, agree to disagree on key issues, eliminate the need for deadline, increase the likelihood of dispute. 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्री टू डिसएग्री ऑन की इश्यूज. एग्री टू डिसएग्री ऑन की इश्यूज. In what way can merger and acquisition contribute to program or service expansion? क्या तरीका हो सकता है? By reducing capabilities or competitive advantage, by achieving critical mass capability or competitive, by limiting service distribution and operation, by decreasing operational inefficiency. 118 का सही आंसर क्या होगा? By achieving critical mass capability or competitive. That should be the right answer. Next question number 119. What purpose do reinforce entrance barriers serves in mergers and acquisitions? इसका क्या आंसर होने वाला है? Encouraging competitor to enter a market, facilitating easier entry for competitor, preventing competitor from entering a market, lowering a barrier for competitor. तो आंसर क्या होने वाला है? Preventing competitor from entering a market. Next, credit risks typically arise because customers fail to pay for goods supplied on credit, customer fails to receive for goods supplied on credit, suppliers fails to pay for goods supplied on credit, suppliers fails to pay for goods supplied on credit. तो 120 का राइट आंसर क्या होगा? कस्टमर फेल्स टू पे फॉर गुड सप्लाइड ऑन क्रेडिट. इजी एकदम. चूज वन ऑफ द व्हिच. अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारा रिपीटेड भी है एमसीक्यू का ऑल्टरनेटिव, तो ऑब्वियस बात है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया तो मैंने उसको एज इट इज रखा है, मैंने चेंज नहीं किया है. तो आप लोग भी जो सही आंसर है उसको मार्क कीजिए मेरे साथ साथ. बाकी आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में देखना बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा. आराम से आप लोग मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा. हम लोगों ने ऑलरेडी 120 कवर अप कर लिया और 60 बाकी है. नेक्स्ट, चूज द वन व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग, वॉलंटरली, ऑब्लिगेटरी, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड ऑब्लिगेटरी. देख रहे रिपीट हो रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 121 का होगा क्या आंसर? इंटरेस्ट रेट रिस्क. नेक्स्ट, अप्रोच, चूज व्हिच इज रिलेटेड टू अनसिस्टमेटिक रिस्क फ्रॉम द ऑप्शन. बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, ऑल ऑफ द अबव. That should be the all of the above. A project can be divided into 5 phases, which is not related to within this the following: initiation, executing, risk analysis, monitoring, and control. So that should be the risk analyzing. That should be the risk analyzing. Next, which is not a benefit of audit of startups? Prevention in the occurrence of fraud, ensure business regulatory requirement compliance, carrying out the activities defined in the planning phase, early identification of error. क्या आंसर होने वाला इसका? Carrying out the activities defined in the planning phase. That should be the answer. Next, question number 125. Select which one is component of the COSO framework or COSO ERM framework, like the internal control framework. Governance and culture, performance, review and revision, all of the above. इसका क्या आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 125 का? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें गवर्नेंस कल्चर भी है, परफॉर्मेंस भी है, रिव्यू एंड रिवीजन भी है. नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क. बिजनेस रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क. तो क्या सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर कवर होने वाला है? बिजनेस रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क. द करेक्ट आंसर वुड बी interest rate risk. Next, market risk is not including equity risk, credit risk, interest rate risk, currency risk. तो market risk के अंदर क्या include नहीं है? क्वेश्चन नंबर 127 में credit risk. Next, enterprise risk management include financial risk, strategic risk, operational risk, all of the above. Enterprise risks include all of the above. Next, enterprise risk management is the process of controlling the activities of an organization to minimize the deleterious
Effect of a risk on its capital and earning, planning, organizing, directing, all of the above. इसका भी आंसर क्या होने वाला है? All of the above. A risk is managed through one of the alternative strategies mentioned below. Risk avoiding, example avoiding rough weather in sailing, risk minimizations, risk sharing, all of the above. इसका भी आंसर all of the above होने वाला है. Easy. Next, market risk include what? Equity risk, the risk of the stock, और interest rate risk और currency risk. इसका भी आंसर होगा all of the above. इसमें explanation किया गया, आप लोग एक बार रीड करेंगे तो हो जाएगा, बट इसका आंसर क्या होगा? All of the above. Next, which one of the following is the benefit of enterprise risk management? Question number 132. By creating a more risk-focused culture, enterprise can implement more standardized risk, organizations can improve focus and increase their perspective on risk in a variety of categories. The answer should be all of the above. Next, which one of the following is the challenge of enterprise risk management? Capital and operational expenditure often increase initially since ERM programs can require specialized and expensive software and service. ERM initiatives increase emphasis on governance, requiring business units to invest a significant amount of time and cost. Consensus agreement of risky severity and metrics across all units of an enterprise can be difficult and continuous. So what should be the answer? Answer क्या होना चाहिए? Question number 133 का answer होना चाहिए ERM initiatives increase the emphasis on governance, requiring business units to invest a significant amount of time and cost. Next, what is one of the key benefit of an internal audit for startup? Increasing product prices, enhancing employee satisfaction, reducing the need for external investors, limiting market competition. Question number 134 का क्या आंसर होगा? Enhancing employee satisfaction. Next, question number 135. Which organization released the Global Innovation Index GII for 21-22? That is important again. ये आराम से आप लोग sorry. Next, World Trade Organization, World Bank, World Intellectual Property Organization, International Monetary Fund. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? क्वेश्चन नंबर 135. दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान देना आप लोग. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया था. नेक्स्ट, व्हाट डज ऑडिट प्राइमरीली एग्जामाइन इन अ बिजनेस? Employee performance review, marketing strategy, financial record and statement, customer satisfaction level. Question number 1 is financial record and statements. Next, what significant role does an audit play for startup seeking fund? For startup seeking funding, it creates a new business model, it attracts new customer, it provides a comprehensive view of the company's business to potential investor, it automate business operation. 137 का क्या आंसर होने वाला है? It provide a comprehensive view of the company's business to potential investor. Next, what is the primary focus when farming internal control in a business? Increasing market share, reducing employee turnover, high risk area of the business, expanding product lines. Correct answer क्या होगा? Question number 138 का high risk area of the businesses. Next, which one of the following is not a characteristic of internal control system? Preventive, corrective, extensive, detective. ये आप लोग बताएंगे. That is very easy. Extensive, क्योंकि उसके अंदर प्रिवेंटिव भी आ जाएगा, करेक्टिव भी आएगा, डिफेक्टिव भी आने वाला है. राइट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 140. Dash view that moral or ethical system may vary from culture to culture, but no one system is better than other. That is cross culture, that is consumerism, that is cultural relativism, that is corporate culture. क्या होगा इसका सही आंसर? इसका होगा cultural relativism. Cultural relativism, right? Next, organization change can be evolutionary, revolutionary, both A and B, none of these. क्या होगा इसका आंसर? Both A. That can be evolutionary and that can be revolutionary. So that's the right answer is both A and B. Why it is important to have an environmental business objective? To address government target, to reduce staff turnover, to keep customer base, to be competitive. The right answer should be to address government targets.
Next, who is an organization has responsibility for working towards the vision, mission, goals? Employer, employee who work for the organization, supplier. क्या होगा इसका सही आंसर? Employer, employee who work for the organization, supplier. Who is an organization has a responsibility for working towards the vision, mission, goal. क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 144 का? Both A and B. The right answer should be, sorry, 143 का क्या होगा? Who work for the organization. Next, firm try to achieve competitive advantage by competing on cost only, quality only, none of the above. यहाँ पे होगा आंसर both A and B. Cost only भी होगा, quantity only भी होगा. Hierarchy of strategic intent क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 145 का हायरार्की. इसका सही आंसर क्या होने वाला है? हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, देन मिशन, देन गोल, देन ऑब्जेक्टिव, देन प्लान. आप लोगों को क्या लगता है? विजन होगा, मिशन होगा, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, प्लान होगा? मुझे तो पहले ही सही लग रहा है, पहले वाला आंसर. एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, उसका क्वेश्चन क्या दिया है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी देन फिल करना है. रिमेन सेट इन प्लेस longer than the mission and objectives, generally forms over a period of time as event unfold, trained to be formed at the same time the mission is developed, none. क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर क्या होने वाला है? Generally form over a period of time as event unfold. Next, competitive advantage can be best described as increased efficiency. What sets an organization apart? A strength and the organization intangible resources. So that should be the increased efficiency. First should be the answer. Next, what is the primary purpose of a mission statement? To outline long-term financial goal, to explain organization purpose and intention, to detail the company's marketing and strategy, to list the products and services offered. So question number 148, to explain the organization's purpose and intention. Next, how should a good mission statement communicate the direction and value of an organization? Through complex and detailed paragraphs, clearly and concisely, with technical jargon, through annual report. Question number 149 का क्या आंसर होगा? Clearly and concisely. Next, what is the impact of a mission statement on a company's culture? It increases market share. It helps shape and define organizational culture. It reduces operational cost. It determines employee salaries. Question number 150. तो इसका आंसर होगा it helps shape and define the organizational culture. Next, what has come under scrutiny in the light of the current global crisis? The validity of a political system, the legitimacy of capitalism, the effectiveness of educational system, the reliability of health care system. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? क्वेश्चन नंबर 151 का, द लेजिटिमेसी ऑफ कैपिटलिज्म. Next, which one of the following is not mentioned as an example of possibly unethical activity contributing to the crisis? Greed, excessive leverage, transfer in financial product, herd mentality. तो क्या बोल रहा है? नहीं मेंशन है 152 में, आराम से समझना. तो इसमें हो जाएगा क्या? ट्रांसफर इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट. व्हाट इज अ बिजनेस एथिक प्राइमरली कंसर्न विथ? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट? नो. बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR, इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट. ऑब्वियस बात हम लोग को पता चल गया, ये होगा बिजनेस पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग corporate governance and CSR. Next, what is forecasting primarily used for in business? Developing new product, using history to make predictions about trend and business, training employees, establishing company culture. तो क्वेश्चन नंबर 154 क्या होगा? Using history to make predictions about trend in business. Right. Next, what is the main purpose of planning? Increasing sales volume, knowing what to do and how to execute in advance, expanding market research, reducing production cost. Obvious बात है, that should be knowing what to do and how to execute in advance. Right? Next, which of the following is not mentioned as area where forecasting is required? Inventory planning, manpower planning, marketing strategy, production planning. Question number 156. That should be marketing strategies. Next, what strategy do low-cost producers use to complete? Differentiation strategy, cost leadership strategy, focus strategy, innovation strategy. The right answer क्या होगा? Cost leadership strategy. Next, which one of the four method
which one method low cost producers use to gain a competitive edge? Increasing their prices, getting inexpensive input, reducing product quality, limiting market research. Question number 158 का क्या होगा? Getting inexpensive input. Next, fintech companies mainly provide technological service, production service, marketing service, financial service. Question number 159 का क्या होगा आंसर? Financial services. Next, dynamic technology is dash startup, fintech, edtech, defense, healthcare. क्या होगा इसका आंसर? That is defense. Next, which problem is solved by agro entrepreneurship? Reduce agriculture related burdens, increase economy rate, reduce urban pressure, all of the above. Question number 161 का आंसर होगा all of the above. Which one of these is not a scheme launched by government to support the agribusiness? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रामीण बंधन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रामीण बंधरम योजना, ई नेम एंड नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे होगा बहुत इजी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Next, question number 163. Which one of the following scheme is not launched by the government for supporting women entrepreneurship? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ट्रेड रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 163 का? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना. उज्ज्वल योजना ये वाला होगा, नॉट लॉन्च बोल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना आप लोग. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योरशिप? ये भी थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो नहीं होने वाला है ये परसेंटेज को, तो इसको याद ही रखना होगा. दैट इज 13.76%. ठीक है. नेक्स्ट, इन अ फैमिली बिजनेस डैश शेयर्स कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मोर देन 50% शेयर्स. ये तो ऑब्वियस बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली रन बिजनेस? रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, टाटा ग्रुप, नन ऑफ द अबव. कौन सा होने वाला है? बोलिए. क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस. माइक्रो एंटरप्राइज शुड हैव द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लेस देन 1 करोड़, लेस देन 2 करोड़, लेस देन 5 करोड़, नन ऑफ दिस. इसका आंसर होगा लेस देन 1 करोड़. नेक्स्ट, एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट इन एक्सपोर्ट अबाउट 50%, 40%, 70%, नन ऑफ दिस. क्या होगा? 40%. Next, the main important consideration for transaction transfers are continuation of operating control, maintenance of liquidity, growth capital, all of this. क्या हो जाएगा? The main important consideration of transaction transfer are all of these. Next, a social entrepreneur is a person who explore production opportunities, loan opportunities, business opportunities, all of this. क्या होगा? Business opportunities होगा. Next, which business model sells social services? Entrepreneurs support low income client employment free for service. That answer should be free for service. Next, import export is the example of employment, market intermediary, organizational support, market linkage. क्या होगा आंसर? Market linkage. Next, what percentage of shares are controlled by family members in family run business? Less than 25, exactly 50, more than half, exactly 75, more than half होगा. ये रिपीट हुआ फिर से. How do family business typically begin? As large corporation, through government grant, as small entity with public funding. As small entity, ये तो in general आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे तो हो जाएगा बहुत इजी तरीके से. What is one reason for the overall stability in family run business? Frequent changes in leadership, short-term leadership roles, loyalty to the principles of the founder and top leadership, high turnover rate among employees. तो ये हो जाएगा loyalty to the principles of the founder and top leadership. Next, what is the role of private equity in family run business? To solely provide capital, to inject strategic element and drive growth, to replace the entire management, to focus only on short-term profits. इसका क्या आंसर हो जाएगा? To inject strategic element and drive growth. Next, which traditional alternative of transfer transaction involves making the company publicly traded? Outright sale, public offering, establishing an issue, straight leverage, recapitalizations. तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसका क्या हो जाएगा 177 का? पब्लिक ऑफरिंग.
Next, what has become a preferred career path for many people in recent years? Traditional employment, entrepreneurship, freelancing, remote work. ये तो सबको ऑब्वियस पता होना चाहिए, entrepreneurship होगा. 179, which initiative has been launched by the Indian government to support startup, startup hub, startup revolution, startup India, startup boost, startup India? कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, जो हम लोगों ने पहले कवर किया है ऑलरेडी, राइट? Next, question number 180. What is characterized by a fast economics and offer opportunity for SMEs to operate developed countries, emerging market, traditional market, mature economies? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इमर्जिंग मार्केट. सही आंसर क्या होने वाला है? इमर्जिंग मार्केट. इसी के साथ हम लोगों का पूरा 180 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ और आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इससे. क्या होगा? क्योंकि आप लोग फटाफट खत्म कर सकते हैं विद इन आवर. मुझे लगता है विद इन आवर हम लोग पूरा एमसीक्यू को कंप्लीट कर चुके हैं, जो 180 एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बुक में डाला हुआ है. अच्छा, इसका आंसर आप लोग बाद में एक बार मैच कर सकते हैं जो लास्ट में दिया हुआ है. मैंने तो जितना मुझे सही लगा उसके हिसाब से मैंने सॉल्यूशन कराया है, और जब मुझे लगता है कि सही होना चाहिए, कहीं पे भी गलत हो तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हुआ है तो सॉरी फॉर दैट. बट आई होप आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप लोग फटाफट 180 क्वेश्चंस खत्म कर सकते हैं विद इन आवर. अगर मेरा वीडियो आप लोग साथ में देखेंगे तो आप लोगों का 180 क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीशन हो जाएगा. और एग्जाम के पहले तो बहुत हेल्प होगा ही होगा, वैसे भी आप लोगों का हेल्प होगा अगर आप लोगों ने पूरा बुक पढ़ लिया है, इंस्टीट्यूट मैथ कवर कर लिया है, या तो मेरा रिवीजन वीडियो देखा है अलोंग विद द नोट्स. उसके बाद अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा 180 क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है उसी एमसीक्यू बैंक को मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है एंटायरली, वन बाय वन. तो 180 क्वेश्चंस आई होप बहुत अच्छे से मैंने कवर अप किया है. आप लोगों को अब बस इसको आराम से सुनना है, एंड मुझे जितना पता है और मुझे जितना समझ है कि बहुत सारे क्वेश्चन देखना इसी तरह से पूछा जाएगा, और यहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट पेपर में भी. अगर देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को पता चल जाएगा. तो आई होप कि आप लोगों को बहुत फायदा होगा, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम, एंड थैंक यू फॉर रिलाइंग ऑन मी. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.